आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर माइलस्टोन का किया अनावरण। मुंबई। आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक प्रतिष्ठित यूरोपीय कंसोर्टियम महाराष्ट्र की अग्रणी कंपनी है और इस कंपनी ने 23 मार्च शनिवार को सेमीकंडक्टर सुविधा के उद्घाटन की घोषणा की। यह अभूतपूर्व प्रयास एक बड़ी छलांग का प्रतीक है जो महाराष्ट्र को सेमीकंडक्टर इनोवेशन और विनिर्माण में एक वैश्विक पावर हाउस के रूप में स्थापित करता है। 25,000 वर्ग फुट की सुविधा में डॉक्टर अनिल काकोडकर, प्रसिद्ध भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी और मैकेनिकल इंजीनियर और महान क्रिकेटर और वैश्विक क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर के साथ साथ आरआरपीएस 4 के संस्थापक, प्रमोटर, अध्यक्ष और सीईओ राजेंद्र के चोदनकर की सम्मानजनक उपस्थिति देखी गई। इनोवेटिव प्रा लिमिटेड आरआरपीएस 4 ने समारोह का संचालन किया। यह महत्वपूर्ण अवसर भारत के तकनीकी परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत का संकेत देता है। अत्याधुनिक ओएसएट सुविधा भविष्य में विकास को गति देने के लिए तैयार है, जो एक व्यापक अनुसंधान एवं विकास केंद्र और मल्टी लाइन ओएसएट और एक फैब फाउंड्री को शामिल करने वाला एक विस्तारित सेटअप स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी, जो महाराष्ट्र सरकार के अटूट समर्थन से समर्थित है। डॉक्टर काकोडकरजी, राज, तुम्हाराही आणि सगळे फॅमिली मेंबर्स आहेत इकडे अकोरो, तो मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही. Big congratulations to you and your team. Your better half is also sitting here. Without their support, I don't think very many things can be achieved. Earlier you said कि मी तुमच्याबरोबर सेमीकंडक्टर वरती बोलत होतो, पण I always believe कि ना 50% knowledge can be dangerous, so I better not open them out. But today's generation, again, I would say they're extremely lucky because literally any information, whatever you want to know, it can be derived within seconds. Failing to understand how it's happening, we take things for granted. When I was, going through few notes on semiconductor, I did not know that it existed in washing machines and all those kind of things. You normally don't think about it, even in cars. You don't think about all these things. It's a bit like a solid foundation at home. Your parents do a lot of things for you. You take those things for granted without getting too deep into those things. You feel कि ये तो होना ही है. So it is little bit like that. So to me, any woman is a backbone of a family. And if one has to speak about semiconductors and electronics, it's the same thing. I remember when I actually looked at Dr. Kapoorkar and your relationship, it obviously reminded me of my relationship with my coach in my younger days, when my coach's advice to me was, the more you talk, the more you will learn, the more you want to absorb, the better you will get in life, and always remember to be a student forever, and that is the only way you will continue to grow. And I can see that relationship here, which is magnificent. Technology can do wonders. I remember in 2002, by then I had already played for 13 years for India, and laptop entered our dressing room.
for the first time. The first reaction was the laptop हमें क्या सिखाएगा, ठीक है? But over a period of time, laptop won our hearts because our sessions became more purposeful. The meetings that we had planned before playing a big game became more precise, more instructive. And today, if any team has to pick one member in the squad, the first one would be data analysts, because they like to study opposition and they like to plan. So this is the direction that the world is moving in, and like I said, today's generation continues to surprise us, and it will never stop because this journey has infinite opportunities. The way our country is responding to all these opportunities is incredible. This journey has started with some expectations. It will give us reasons to smile with some wonderful experiences as well. On this journey, I want to wish you the very best of luck. I know there are going to be challenging moments, there are going to be ups and downs, but together I see this one solid team. I see good things happening in future. I want to wish you the very best of luck. Thank you once again for having me. Thank you so much, sir. I would request you to please take The concept was obviously something which is beyond somebody's imagination of coming into this chip, and the best way this journey has started is very uniquely that we had two legendary legends at one time to bless this. I mean, this itself is an indication that we will not fail. Dr. Kakurkar sir has been my mentor all throughout, and it was just in our journey that we met Sachin sir, and he showed a lot of initiative in what we are doing actually, and it was in a very short notice that he decided, because the moment he heard about semiconductors he was more excited. And what else can you expect from a nearer to God person coming and blessing us in such a short notice? So I think it is a wonderful beginning, and I simply feel that we will not fail. So we have a 1-year plan for it to go, which is what is the kind of investments, what are you buying? So technically, basically yes, semiconductor venture is going to be a very huge investment, and but we are going to start it in phases, and the phase 1 would be like the standard OSAT, which is outsourcing semiconductor and assembly testing. We already have initiated a round of for investments, and we were very happy to know that even with the support that we got, the main aspect was the technology. So that is something which is in our control, which has given us a valuation of, today as we stand, this company has a valuation of 500 crores, and there are investors investing at that value. So we have got good enough reserves to initiate the OSAT, which is why Apurva mentioned that by Diwali we will be in a position to come closer to having set up something very real actually. And by 2025 June we should have a complete OSAT facility commissioned, wherein a good amount of investment will go in terms of machinery and part technology, because OSAT obviously cannot be deployed unless you have a technology agreement signed with the technology provider, because he is giving his heart, because he is giving us a wafer which is already built, and we have to do an assembly testing. So yes, and we are doing this fast because we are going to obviously seek blessings from Maharashtra government, because once we are successful in this, obviously this place is going to be very small, and we have been in talks with the government, and they are very optimistic about it, and I think very shortly we will see some good support from government, where there will be a lot of subsidies which everybody is speaking about, where Gujarat, we had Micron and Tata ji commencing their foundation stone, wherein obviously they have also come in with a lot of subsidies. Maharashtra government is also equally thinking that lines, and I think we will have some better clear understanding with the government in the coming times. But notwithstanding the fact that they are always appreciating the fact, we had a couple of discussions, had a presentation, and it will be then a bigger facility,
bigger investment, bigger subsidies. As I rightly said, we are very confident that we will invest at least 5,000 crores over the next 5 years, which is the phase 1 of the project. And the phase 2, we are thinking about another 5,000 crores. But by the time we have completed phase 1, we will have huge investments coming in. So our 10,000 crores will be good enough to attract another 25,000 crores of investment in the company. अगर मोदी जी का ये अगर स्कीम नहीं होता तो सेमीकंडक्टर कंसेप्ट इंडिया में नहीं आता, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो कोई उतना रिस्क लेना चाहेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में फेलियर्स बहुत होता है। डिज़ाइन भी अगर सही कभी होता है तो फैब में काफ़ी फेलियर्स होते हैं, और वो फेलियर को जो विथस्टैंड करना कभी कभी कॉरपोरेट्स को भी डिफ़िकल्ट होता है। तो जब ये स्कीम्स आ गए तब जैसे अपने पहले विजनरी जैसे रतन टाटा जी मेरे बहुत ही बड़े विजनरी, तो उसने तो इमीडिएटली ऐलान कर दिया कि हम वो डाल देंगे, क्योंकि सब्सिडी में जो बेनिफिट्स आ रही है, जैसे अभी सेमीकंडक्टर्स में ओवर एन एवरेज 50% का सब्सिडी मिल जाता है। फिर गवर्नमेंट विद इन इंटर स्टेट में अगर आप सेल करोगे तो आपका जीएसटी वेवर मिलता है। तो कहीं ना कहीं जाके आपको 50 to 70% का सब्सिडी मिल जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए। जो टेक्नोक्रेट्स सोच सकते हैं वो यही ईरा में सोच सकते हैं। एंड ये आई रियली, मेरा जो पहला सेटअप भी है RRP S4 इनोवेशन जो अभी लिस्टिंग में जाएगी, वो भी जो आत्मनिर्भर है, वो बस जस्ट मोदी जी का जो एक स्कीम एक सोच है ना सर, वो टेक्नोक्रेट्स और MSME को कहाँ से कहाँ लेके जाएगा सर। गवर्नमेंट पॉलिसी का फायदा और इससे आने वाले फ्यूचर में किस प्रकार का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं फ्यूचर इस फील्ड? सर मैं शायद बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट मैं कहता हूँ कि एक बार मैंने अब्दुल कलाम जी का एक बुक पढ़ा था कि इंडिया इज़ मूविंग टू अ सुपर ह्यूमन। कोई आके इसको सुपर ह्यूमन करेगा, ये एक कंसेप्ट थी कलाम जी की। और कलाम जी जब भी कुछ बोलता है ना तो उसका एक इंट्यूशन है, वो ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन नियर टू गॉड। उसका ही सीज द फ्यूचर। सब लोग सोच रहे थे कि कौन हो सकता है ये, हु कैन ब्रिंग इट सुपर ह्यूमन, एंड वी फाउंड दिस पर्सन, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी। और सर मैं शायद लोग मुझे ओवर ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, बट मैं ये देखता हूँ कि 4 साल में फॉरेनर्स विल कम एंड वर्क इन इंडिया। This is what I am going to see. We will see Americans, we will see Britishers, they will be in India, they will be working here, and they will be a part of the Indian conglomerate. This is what I am seeing. India always has a very good skill set. And what is the, Modi ji has realized that most of them go abroad, obviously for various reasons actually. But now things are reversing. You will see a lot of people are coming back to India, and in the next 4 or 5 years, the way I cannot disclose some of the technologies that have come into India, obviously simply implies that in the next 4 to 5 years you will see people coming into India, and India is going to be superhuman, established beyond doubt. Yes. सर आज 2 खास शख्सियत आए थे, आज कार्यक्रम में 2 खास शख्सियत आए थे, आपको क्या लगता है कितना बूस्टअप मिला है और आज का पूरा एटमॉस्फेयर लेके क्या कहना चाहिए? मैं कॉस्मिक एनर्जी और यूनिवर्स को बहुत मानता हूँ। इनको एक साथ लाना तो मेरा ताकत ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इनको दोनों को एक साथ एक ही टाइम पे आना क्लियरली इम्प्लाइज कि हम जो भी करेंगे अभी सक्सेसफुल रहेगा। नई कटिंग एज फैसिलिटी जिस तरह से लॉन्च की है, ये अन्य जो कंपनियां हैं उनसे कितनी अलग और बेहतर आपको लगता है? सर क्या है, हर एक कोई सेमीकंडक्टर जो डालेगा वो निश काम करेगा ही, नो डाउट अबाउट इट। बट अभी जैसे है, फॉर एग्जांपल अभी मारुति अपनी गाड़ियाँ बनाती है, स्विफ्ट बनाती है, उसका ये आ रहा है, जिप्सी आ रहा है। और मर्सिडीज जो है वो C क्लास बनाता है, वो E क्लास बनाता है, वो S क्लास बनाता है। तो वो वेरिएशन हर एक कंपनी में होगा। आज अगर एक कंपनी ऑटोमोबाइल में फोकस करेंगे, जैसे टाटास का ये मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो चिप्स बनने हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा प्रमाण करेंगे, हम लोग हमारे फील्ड में करेंगे। तो हर एक अपने अपने फील्ड में अलग रहेगा। तो इसीलिए जो भी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आएगी इंडिया में वो बहुत ही अच्छा काम करेगी। हम लोग जाएंगे इमेजिंग में, क्योंकि हमारा फील्ड है इमेजिंग का, और इमेजिंग में आज बहुत ही
कम लोग जो मैंने प्रेजेंटेशन में कहा था, वर्ल्ड में 3 ही लोग हैं, मार्केट इज़ ओवर multi-billion dollars एंड ये हमको ये जो कुछ भी करने के लिए ना सर एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी भी हमको मिला और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त एनर्जी आज आ गई, 2 लेजेंडरी और दोनों का सोच भी सेम रहा। मेरे हिसाब से सर ये हमारा वेंचर्स, हमारे पास अपूर्वा जी है जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और शिखर, ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं और हम लोग इसके ऊपर काफ़ी एडवांस काम कर चुके हैं। इसकी वजह से क्या है, ओएसएट करने के लिए जो पेपर्स चाहिए वो कोई टेक्नोलॉजी कंपनी देगी नहीं जब तक उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हम उसको हैंडल करेंगे, तो वो एक बेनिफिट हमारे फेवर में है।